नाम राहुल है और आज हमारे पास जो है iPhone 6 आया हुआ है। नो EMI नंबर नहीं आ रहे, जिसके कारण से जो है कस्टमर कह रहे हैं कि भैया इसमें नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। तो आज मैं आपको उस चीज़ का सोल्यूशन दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप लोग कैसे रिपेयर कर सकते हो। आप इसी तरीके से मेरी वीडियो पे बने रहें और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रहा iPhone 6 जिसके IMEI नंबर नहीं आ रहे। अगर आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम में कोई सेट आता है तो आप देख लेना कि कैसे उसको फाइंड करना है मेरी वीडियो के थ्रू। गाइस, जनरल में गए, अबाउट में जाके ये देख लेना कि फर्मवेयर आ रहा है। गाइस, IMEI नंबर भी यहाँ पे अंदर शो ऑफ कर रहा है, बट बाहर यहाँ पे IMEI नंबर नहीं आ रहे, जिसके कारण से नेटवर्क नहीं आ रहा। तो आज हम इसका जो है गाइस बेसबैंड रिपेयर करेंगे। तो आप मेरी वीडियो पे ऐसे ही बने रहें। मैं आपको आज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे iPhone 6 के IMEI नंबर हम रिपेयर कर सकते हैं।
गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्रिंट जो हैं ये बेसबैंड के दोनों के दोनों मारे हैं, ऐसे करके जंपर मारे हैं। और ये 2 प्रिंट बहुत मेन प्रिंट होती है। अगर ये वैसे 90% EMI नंबर इन 2 प्रिंट के कारण ही नहीं आते। तो आप जब भी बेसबैंड CPU iPhone 6 को रिपेयर करें तो निकाल के बेसबैंड IC देन यहाँ पे सीधा सीधा 2 जंपर मारने हैं आपने। और आगे का स्टेप में बताते हैं उसके बाद आपको क्या करना है। भाई सब में जो है बेसबैंड IC को जो है क्लीन करना है रिवॉल्विंग के लिए। देख सकते हैं मेरा तरीका इसको साफ करने के लिए कैसा मैं इस्तेमाल करता हूँ। इस तरीके से होती है हमारी बेसबैंड IC बोले खराब नहीं होती। गाइस ये है iPhone 6 की एक्सटेंशन और अब हम अपनी बेसबैंड IC को रिवॉल्व कर रहे हैं PPT पेस्ट लगा के। देख सकते हैं हमारी बेसबैंड ऐसी रिवॉल्व हो गई है। बेसबैंड IC प्रॉब्लम्स पहले उसके डायरेक्शन जरूर देख लेना।